Welcome everyone. How all are you doing? I hope that you are keeping fine and you are healthy, wealthy. Yes. Okay. So I hope that you are enjoying my lectures presented by me on behalf of this platform. And we have come so far covering with the 4 chapters, explaining you the major concepts of geography that you were studying, trying to connect you, okay, with the real world examples because you need to know whatever you are studying is not only written in the book, but it is also happening in your outside world. Wherever you are living, that is also taking place there, okay? Okay, so I believe that you all are fine and you are able to understand the lectures. You are enjoying the way that I am teaching you, the process, and believing that you are doing your homework. The topics that are being given to read you, the topics that are given to you as homework. I hope that you have gone through those things. In the last lecture, if you remember, I asked you to just go through that newspaper, okay, and you need to check out temperatures, sunrise, sunset that comes in the newspaper every day, the weather conditions, the weather information provided in the newspaper. Have you checked it? क्या आपने check करी? And did you read about cyclones that I discussed in the last lecture about? Please do go through these things, okay? Because ये आपके कुछ ऐसे phenomena हैं जो आपको पता होने चाहिए. And since now you are growing up, you are studying geography. Geography is what? It is the study of Earth surface, and you and me are living on this Earth surface. So just like one needs to know about themselves, we also need to know about our planet. हमें हमारे planet के बारे में भी पता होना चाहिए. Okay? Because अगर ये planet exist नहीं करता, as I always say, you and me would not have been even able to see and survive. Okay? This technology would not have survived. All right. So it is all because of the planet, which is providing you some suitable conditions, the essential components. That is why the survival is possible. And today we will be coming up with this new chapter. That is chapter number 5, water. Okay. So again, very, very important essential component of the life, that is water. So now I think you are able to understand that हमने आपके 3 essential components पढ़े थे. Land, that is lithosphere, air, atmosphere, and water, hydrosphere. Now we are coming to the third essential component, the domain, major domain, that is hydrosphere. Okay, so आपका जो pattern of syllabus है, that is to teach you in detail about these domains. Okay, सबसे पहले लिथोस्फेयर के बारे में हमने डिटेल में स्टडी करा, आपका पूरा अर्थ के बारे में हमने देखा, क्रस्ट के बारे में स्टडी करा. ठीक है, इनसाइड द अर्थ कौन से प्रोसेसेस हैं, ऑन द अर्थ सरफेस कौन से प्रोसेस वर्क करते हैं. देन हमने आपके एयर चैप्टर डिस्कस करा. In the air, we talked about the atmosphere. Okay, that was your second major domain. कौन सी layers हैं atmosphere की, वो हमने discuss करी. Now we are coming to this new chapter, that is water. Okay, so I hope that water के बारे में आप सबको पता है what is water, and very often you waste water also. जब आपको बार बार बोला जाता है कि आप पानी वेस्ट ना करें, but still करते हैं हम water को waste. Okay, because ये हमने create नहीं किया है. This has not been created by human beings. It is something nature. It is the gift of nature. And इसलिए हमें लगता है चलो ठीक है कर दो waste. ऐसा? What do you think so? Am I right? Okay. So we are beginning with this new chapter, your favorite topic. I think very, very favorite of everyone.
that is water, and that you need every time. Without this you can't live, without this you will not be healthy. Okay. And it is important that we have fresh water. I mean, fresh water, we should drink fresh water, and we should not pollute the water. These are some of the statements which are often stated. Okay. All right. So let's start the chapter. I hope that all of you are having your books with you. All right. So when you think of water, what images come to your mind? जब आप water के बारे में बात करते हैं, या जैसा मैंने अभी आपको बोला कि हम आपका चैप्टर नंबर 5 वाटर स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपके दिमाग में कुछ इमेजेस आई होंगी, राइट? यू मस्ट बी हैविंग सम पिक्चर्स ऑफ वाटर इन योर माइंड फॉर श्योर. ओके, not only you, but I also have some images of water in my mind while talking about it. Okay, and if you're feeling to drink water, you can have it. Okay, so when you think of water, what images come to your mind? You think of rivers. आपके सामने ऐसे rivers की pictures आई होंगी, या waterfalls, picture patter of raindrops, water in your taps, the water that you have in your glass in front of you. Okay, the water bottles that you have. Okay, or it might be raining outside. अगर आपके वहाँ बारिश हो रही होगी, so that is also water coming down to the earth's surface and making the earth very lively. And if it's raining at your place, then it might be the best time to study about water. Okay. All right. So children love to float paper boats in rain puddles. Have you ever made the paper boats? क्या कभी आपने paper boats बनाई हैं? It's like very, very fun. I also make paper boats. I even make paper boats today also, and I love to float them in the water. Have you ever done it? All right. So by noon the puddles vanishes. Where does the water go? अब आप सोचिए कि इतना सारा जो बारिश का पानी आता है, वो आखिर गायब कहाँ हो जाता है? कोई स्टोर कर रहा है? Is there anything which is storing it? Where is it going? आपके घर के बाहर अगर आप कभी नोट करेंगे, if you have observed it, there is a lot of water collected. Okay, water, the rain comes and the water gets collected outside our homes. And that is why you are able to float the paper boats that you make out of the newspaper or the waste paper, right? So वो पानी जो है, जो कलेक्ट हो गया है बाहर, वो कहीं ना कहीं तो जाता है. कहाँ जा रहा है वो वाटर? The sun's heat causes evaporation of water into vapors. So it happens after rainfall. What happens? Sun comes, and because of that जो sun की heat होती है, उसकी वजह से एक evaporation का process होता है. एंड उस इवेपोरेशन के प्रोसेस से जितना भी पानी है वो सारा का सारा आपका वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड्स. ठीक है. तो जब आपके वो वाटर वेपर्स जो ऊपर गए हैं आपके वार्म एयर के साथ में, ये हमने पहले लास्ट चैप्टर में भी आपकी कवर करा है. आई एक्सप्लेन्ड यू हाउ द एयर कम्स ऑन द अर्थ सरफेस. फिर अर्थ सरफेस पर क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर आपके ज्यादा होता है, तो ये अर्थ सरफेस पर आने के बाद ये एयर गर्म हो जाती है. गर्म होने के बाद ये एयर राइज करने लगती है, एंड स्लोली ग्रेजुअली आप ये देखते हैं जब ये राइज कर रही है, ये वार्म एयर अपने साथ में वाटर वेपर्स कैरी करती है. ठीक है. इट कैरी द वाटर वेपर्स, एंड जब ये ऊपर पहुंच जाती है एक सर्टेन हाइट तक, एक ऑल्टीट्यूड तक, तब जाकर के ये एयर कूल डाउन करने लगती है. ठीक है. तो क्योंकि अब इस एयर के अंदर वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट है, तो ये वाटर वेपर्स भी इस एयर के साथ साथ में क्या करेंगे? कूल डाउन होने लगेंगे. और क्योंकि ये कूल डाउन होने लगते हैं, तो आप देखेंगे कि क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो जाती है. क्या हो रहा है? क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है. फ्रॉम देयर इट में फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट. फिर आप देखते हैं कि क्लाउड्स बारिश देते हैं. ठीक है. एंड रेनफॉल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ईदर वाटर, जो आप सिंपल वाटर फॉर्म में आप देखते हैं. ओके. एंड इट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ स्नो, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्लीट ऑल्सो. रेनफॉल को प्रेसिपिटेशन भी बोला जाता है. रेनफॉल इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन. द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअसली चेंजेस
Its form and circulate between oceans, atmosphere and land is known as water cycle. So water cycle किसे बोलते हैं? जब आपका पूरा का पूरा ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, when the warm air comes, it touches the earth surface, फिर जब वो वार्म एयर राइज करती है तो आपका इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। एंड इवेपोरेशन के प्रोसेस में आपके जितने भी वाटर वेपर्स होते हैं वो उस एयर के साथ में मूव करते जाते हैं, ठीक है। एंड जब ये वार्म एयर आपकी राइज कर जाती है, एक सर्टेन हाइट तक ये पहुंचती है, सर्टेन हाइट पर पहुंचने के बाद में ये वार्म एयर कूल डाउन होने लगती है, तो उस वार्म एयर में जो भी वाटर वेपर्स हैं वो भी क्या होंगे, कूल डाउन होने लग जाएंगे। सिंस इट इज गेटिंग कूल डाउन, तो क्या होगा, आपके क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो गई। अब क्लाउड्स क्या है आपके, इतने हैवी हो जाते हैं, वाटर वेपर्स इतना ज्यादा हैवी हो जाते हैं दैट दे कांट इवन मूव, एंड सिंस नाउ दे आर नॉट एबल टू मूव, व्हाट हैपेंस, रेनफॉल कम्स डाउन, ठीक है। अब आपकी क्या है, बारिश आ गई। अब सिंस रेन इज कमिंग डाउन, द वाटर इज ऑल्सो कमिंग, ये आपके ओशंस में जाएगा पानी, ये आपके रिवर्स में जाएगा, ये आपके सारे लैंड को ग्रीन कर देगा, ठीक है। एवरीवेयर विल बी वाटर वेर एवर द रेन इज कमिंग, राइट। अब क्या होगा, फिर से ये जो पानी आपका यहाँ पर आ गया है लैंड पर, फिर से आपका सन आ जाएगा, ओके, अगेन द सन विल कम एंड अगेन इवेपोरेशन का प्रोसेस फिर से स्टार्ट होगा, बिकॉज एज सून एज द सन रेज कम, ये इस वाटर को इवेपोरेट करने लगेंगी और सारा का सारा आपका वाटर वेपर वापस से उस वार्म एयर के साथ में मिल करके राइज होने लगेगा, ठीक है। सो ये प्रोसेस क्या है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसे बोला जाता है वाटर साइकिल। क्या बोलते हैं इसे, वाटर साइकिल। आर अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम। टेरेरियम क्या होता है, टेरेरियम इट इज एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स, ठीक है। अगर आपने देखा हो तो आपके घर में इनसाइड द हाउस ऑल्सो प्लांट्स रखे जाते हैं, दैट इज टेरेरियम, ठीक है। सो द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। आज से पहले इतने साल पुराना जो पानी है, जो सेंचुरीज अगो एग्जिस्ट करता था, दैट वाटर इज एग्जिस्टिंग इवन टुडे। क्यों, बिकॉज ये वाटर साइकिल है, इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। अभी आपकी बारिश हो रही है, अगेन द वाटर विल गेट कलेक्ट, ओशंस में वाटर गया है, रिवर्स में वाटर आ गया है, अगेन आपका सन बाहर निकलेगा, द सन विल बी कमिंग आउट, द सन विल बी शाइनिंग, द हीट विल बी कमिंग, टेम्परेचर्स प्रेशराइज होंगे, दैट हाई टेम्परेचर रीजन, there you will see that the air will get warm, it will get rise, along with that water vapors will also be rising। फिर एक सर्टेन हाइट तक पहुंचने के बाद में ये गर्म हवा ठंडी होने लगती है, और क्योंकि ठंडी होने लगेगी ये कंडेंस होने लगेगी, इसमें जितना भी वाटर वेपर है, वाटर वेपर सारा का सारा क्या है, अक्यूमुलेट होता है, और अक्यूमुलेट होकर के वो क्लाउड्स की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब क्योंकि वो हवा ठंडी हो रही है, वो क्या हो जाएगी, डेंस हो जाएगी, डेंस मतलब हैवी हो जाएगी, अब वो क्या है, नीचे आएगी, ठीक है। देन यू सी कई जगह पर स्नो की फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होगी, एट टाइम्स यू विल सी देयर विल प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन। The water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon River 100 years ago. The major sources of fresh water are river, ponds, springs, and glacier. Very, very important question. बहुत important question है ये. What are the major sources of fresh water? Fresh water के major sources क्या हैं? Very important question. It will be asked in your exam. इसको आप mark करिए, underline करिए. Major sources of fresh water. So the major sources of fresh water are rivers, ponds, springs, and glacier. The ocean bodies and the seas contain salty water. On the other hand, you see that जो आपकी ocean body है या जो sea है, वहां पर आपको salty water मिलता है. The water of the ocean is salty or saline as it contains large amount of dissolved salt. Most of the salt is sodium chloride or the common table salt that we eat. ठीक है, सो आपको पता है दैट फ्रेश वाटर की जो क्वांटिटी है, जो फ्रेश वाटर का अमाउंट है, वो हमारे अर्थ सरफेस पर बहुत कम है, इट इज वेरी वेरी लेस, राइट। द वाटर विच इज अवेलेबल फॉर द ह्यूमन यूज इज ऑल्सो लेस बिकॉज दैट इज द फ्रेश वाटर। रेस्ट ऑफ द वाटर दैट यू सी इज आइदर इन ओशन और इट इज इन सी, ठीक है। जो मेजोरिटी ऑफ द वाटर है वो आपको ओशन में है या सी में है। नाउ दैट ओशन वाटर और सी वाटर इज सॉल्टी, वो आपका सॉल्टी वाटर है। अब वो सॉल्टी वाटर कैसे हुआ, बिकॉज उसके अंदर आपके सॉल्ट्स प्रेजेंट है, सॉल्ट्स डिजोल्व है। कौन कौन से सॉल्ट हैं जो उसमें डिजोल्व है, इधर इट इज सोडियम क्लोराइड,
सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट का नाम होता है, वो सॉल्ट आपका वाटर में अवेलेबल होता है, दैट इज वाई वो वाटर सॉल्टी वाटर होगा, ठीक है। या फिर जो आप कॉमन टेबल सॉल्ट खाते हैं, दैट इज द डेली सॉल्ट दैट यू यूज, ओके, दैट माइट बी ऑल्सो अवेलेबल इन द ओशन वाटर। तभी जो आपकी सॉल्ट की फॉर्मेशन है, दैट सॉल्ट फॉर्मेशन, तभी आप देखिएगा सॉल्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है। चेकआउट, इफ यू गेट टाइम, जस्ट चेकआउट, आई विल नॉट टेल यू, ये आप चेक करेंगे, ओके, बिकॉज आपको भी तो कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए, यू नीड टू नो समथिंग न्यू, सो चेक आउट द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो आप नमक खाते हैं, आपकी टेबल पर जो सॉल्ट होता है, ओके, टेबल सॉल्ट जिसे बोला जाता है, ठीक है, सो उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है वो आपको पता होना चाहिए, ओके। सो दैट सॉल्ट इज प्रेजेंट इन दी ओशन वाटर बॉडी, वो ओशन में प्रेजेंट होता है, सी में प्रेजेंट होता है, एंड उस पूरे के पूरे ओशन वाटर को, उस पूरे के पूरे पर्टिकुलर एरियाज को, उस वाटर को इवेपोरेट करा जाता है, वो वाटर पूरा का पूरा इवेपोरेट हो जाता है, एंड देन योर सॉल्ट इज लेफ्ट। आप इसके बारे में पढ़ेंगे, इसको आप चेकआउट करें, आप यूट्यूब पर जाकर भी कुछ वीडियोस देख सकते हैं, ओके। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट योर वाटर इंट्रोडक्शन दैट वी हैव डन। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, दैट इज योर वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होती है, यू शुड नो अबाउट इट, व्हाट इज वाटर साइकिल, बिकॉज ये आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, देन फ्रेश वाटर के सोर्सेज क्या है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड, what are the sources of fresh water, so two important questions from here, एक आपको ये water cycle, you should know this diagram also, very very important, आपको ये diagram भी पता होना चाहिए, okay। now come to this map, इस map को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो आपके map दे रखा है बुक में, this map is showing you the major seas, lakes and rivers, just have a look at this map. This map is showing you the major seas that we have in the world, the major lakes that we have and the rivers that we have, because ये वो सारे आपके sources हैं water के, these are all the sources of water, okay। So you can see here, चलिए सबसे पहले हम ओशंस देखते हैं, कौन कौन से ओशंस है। इफ यू रिमेंबर, हमने आपकी क्लास 6 में जब हम कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस डिस्कस कर रहे थे, हाइड्रोस्फीयर डिस्कस कर रहे थे, एट दैट टाइम वी डिस्कस द 5 मेजर ओशन बॉडीज, हमारे पास में 5 मेजर ओशन बॉडीज है, कौन कौन सी है, पैसिफिक ओशन, देन वी हैव एटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, Southern Ocean and Arctic Ocean. These are your 5 major ocean bodies. One, Pacific Ocean. Second, Atlantic Ocean. Third, Indian Ocean. If you remember, Indian Ocean का नाम हमारी कंट्री इंडिया पर रखा गया है, ओके, बिकॉज इसका जो मेजर पोर्शन है वो इंडिया टच करता है, ओके। Indian landmass is touching the major portion of this water. That is why इसका नाम Indian Ocean रख दिया गया. Then you see fourth is your Southern Ocean. Okay. And then here you can see fifth is your Arctic Ocean. All right. Arctic Ocean आपका पूरा frozen है. Frozen, completely snow covered. ये आपके मेजर ओशंस हो गए, ठीक है। अब आप आ जाइए नेक्स्ट, आप देखते हैं हम लेक्स। लेक क्या होता है, व्हाट इज अ लेक, आपको पहले बताया है, लेक इज बेसिकली दैट वाटर बॉडी विच इज सराउंडेड बाय लैंड मास, एक ऐसा वाटर बॉडी जो कि चारों तरफ से आपके लैंड से सराउंडेड है, किससे सराउंडेड है, लैंड से, क्लियर, दैट इज योर लेक। सी हियर वी बिगिन विथ नॉर्थ अमेरिका, हम सबसे पहला कॉन्टिनेंट लेते हैं नॉर्थ अमेरिका, आपको पता है हमारे कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं, तो नॉर्थ अमेरिका में आप देखें यहाँ पर कौन कौन से लेक्स हैं, you have here Great Bear Lake, Great Slave Lake, Lake Winnipeg, Lake Superior, Lake Huron, ठीक है। Then you have your Salt Lake City, ये lakes के names हैं। Only thing that you know over here, आपको ये सब याद नहीं करना, you should know the names of these lakes, ठीक है, आपको नेम पता होने चाहिए कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सा लेक है, ठीक है। This is for your extra information, ठीक है। देन यू सी हियर नॉर्थ अमेरिका में यही लेक्स प्रेजेंट है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए एक सी है, दिस इज योर करेबियन सी, व्हाट इज दिस, करेबियन सी, ठीक है। साउथ अमेरिका में आपके पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है जिसे बोला जाता है अमेजोन रिवर, इफ यू रिमेंबर
लार्जेस्ट रिवर है ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, अमेजोन बेसिन है यहाँ पर पूरा का पूरा, very very important river of this continent, that is South America.